once again, Jimmy Neesham did all the hard work, gave his best, and but in the end, his team did manage to cross the line. Yes, Australia have defeated New Zealand by 5 runs, and I'm looking quite sad. I was supporting New Zealand because New Zealand, every Indian love New Zealand and their player, their country, and they are really a gentleman team, the kind of team which you want to. And 4 विकेट्स अब बांग्लादेश के भी गिर चुके हैं. मैं अभी बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे वीडियो शूट कर रहा हूँ. एंड बांग्लादेश ऑल्सो लुकिंग इन डीप ट्रबल. एंड नीदरलैंड्स दूसरी जीत उनकी भी आ रही है. बट नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस गेम. ऑस्ट्रेलिया played exceptionally well. New Zealand showed their spirit, and they should feel proud that they have fought till the last delivery. And it was the first game which went to the wire when the both teams played their full quota of 50 overs, and result was uncertain till the last delivery of the game. And man of the match David Warner or Travis Head, comeback पे 100 करा. And New Zealand made some blunders which we'll talk about in the later part of the video. And India taking on England tomorrow. Let's talk about that also. उससे पहले intro. Let's start the video. New Zealand won the toss and they asked Australia to set a target, which was the right thing according to the track, because Dharamsala is always a chasing paradise. We remember King Kohli's 95 in the last game. Australia, Travis Head वापस आते हैं. David Warner, Travis Head, दो लेफ्टी कंप्लीट ग्राउंड में आग लगा देते हैं पहले 15-20 ओवरों में. कंप्लीटली इस मैच को वन साइडेड करने की पूरी ट्राई करते हैं. ऑस्ट्रेलिया was cruising at one stage. They were after 24 overs, they were 220 something with the loss of 1 wicket. New Zealand, they did a blunder. I tweeted when Australia was after 7 overs, Australia were at the 85 per rulers that they are missing Michael Bracewell. But then suddenly I remember that Glenn Phillips भी तो इस मैच को खेल रहे हैं. आपने न्यू बॉल Glenn Phillips को क्यों नहीं दी? आपने सबसे बड़ा ब्लंडर करा, उसी ने आपको मैच को कॉस्ट करा. ग्लेन फिलिप न्यू बॉल से बॉलिंग करते हैं, उनकी आर्मर बहुत डेंजरस होती है और ये सीरियसली मैं कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया को ट्रबल करते. ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया से पिछले महीने पूरे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, अभी लास्ट वीक ही वो इंडिया आते हैं. वो यूज टू है, वो उनको 150 की बॉल की वो यूज टू है. आपने उनके आगे स्पिन क्यों नहीं फेंकी? And that was a big blunder. At one stage New Zealand won the game. Australia reduced to 320 for 6, but then suddenly something happened. Pat Cummins, brilliant cameo. Glenn Maxwell, brilliant cameo. As a result, Australia scored over 380, and it was looking a one-sided game because World Cup history में कभी इतना target chase नहीं हुआ. So we all were expecting कि Australia to win this game comfortably and perhaps replace New Zealand to reach at the third position of point table. But राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, रचिन रविंद्रा. रचिन नाम का जो सीक्रेट है वो इन दोनों का मिक्सचर है. बहुत कमाल की बैटिंग करते हैं. एंड एक्चुअली आई वुड लाइक टू टेल यू अ स्टोरी. व्हेन दिस टूर्नामेंट वाज स्टार्टेड, आफ्टर द फर्स्ट गेम माय डैड सेड दैट इस वर्ल्ड कप की फाइट जो है वो रचिन रविंद्रा होने वाला है. आई वाज थिंकिंग कि पापा शायद मोमेंटम में बोल गए कि बहुत अच्छी इनिंग खेल दी, बट I must say that he was right. Rachin Ravindra, 2 centuries, 175 against 1 inning of 75 against India, and he's the star. He's the upcoming star. And I saw him in 2020 Super Smash tournament, local domestic tournament of New Zealand. He played for, I guess he played for Auckland or Wellington. I can't remember, but he was an all-rounder and he used to bowl. He also आज भी bowling करी and कमाल का प्लेयर यार. इंटरनेशनल आउटिंग में उनको पहली बार इंडिया में देखा था जब वो 2 साल पहले आए थे इन्हीं टूर्नामेंट खेलने के लिए, इंडिया न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए. एंड उनमें पोटेंशियल लगी थी यार. और एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट before 1 month before, no one thought that he would play a tournament. He would play a single game in this tournament, and he replaced Kane Williamson. He's a big name, yeah, Kane Williamson. और उनको replace कर देना, and we have to accept that Kane Williamson को miss नहीं करा न्यूजीलैंड इस टूर्नामेंट में. And आज एक बहुत ही ब्यूटीफुल जेस्चर देखने को मिला. Kane Williamson was carrying drinks for his team and such a humble guy, and I really love him. Kane Williamson he's one of my favorite players and one of the best human beings. I've never met him personally, but he seems to be. And New Zealand
fought well in the end. Jimmy Neesham 2019 में हार्ट ब्रेक हुआ था, ट्वीट आया था, किड्स डोंट टेक अप दिस स्पोर्ट, इट्स रियली टेक समथिंग एल्स, टेक बेकिंग समथिंग. मैंने अभी वो ट्वीट देखा था दोबारा. और आज भी नीशम ने बैटिंग अच्छी करी, लेकिन उनकी जो थॉट प्रोसेस थी वो समझ में नहीं आई. क्यों वो फ्री सिंगल्स ले रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया ने फील्ड पूरी ओपन करी हुई थी कि वो उनको सिंगल दे रहे थे, वो ले रहे थे. एंड ऑस्ट्रेलिया दे आर लुकिंग डेंजरस नाउ यार. एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि वो टूर्नामेंट जीत जाए यहाँ से. दे आर लुकिंग डेंजरस. दे हैव फाइनली उन्होंने अपना मोमेंटम जो है वो पकड़ लिया है. एंड दे हैव 4 wins ऑन अ बाउंस. दे हैव वॉन 4 matches ऑन द बाउंस. एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि वो पॉइंट इस लीग स्टेज को टॉप तो नहीं, लेकिन सेकंड पे या थर्ड पोजीशन पे खत्म करें. एंड हो सकता है इंडिया माइट फेस देम इन द सेमीफाइनल्स. बट ऑस्ट्रेलिया, Travis, after the inclusion of Travis, said they are looking more dangerous. New Zealand on the other hand, against India also New Zealand fought well. They were in the game, especially they were in the game against India. They were in the game today also. So New Zealand should be proud of what they have achieved, what the kind of cricket that they have played. छोटा सा country है यार. They have just 50 lakh people, 5 million population in New Zealand की. And the kind of talent that they have produced, is team. There is no Kane Williamson in this team. There is no Michael Bracewell in this team. Still, they are doing well, and they are doing exceptionally well, yaar. By the way, currently Bangladesh the score is 53-3, and this game is also looking कि ये game भी down to the wire जाएगा, and Bangladesh now in serious trouble, and it would be embarrassment अगर वो ये मैच हार जाते हैं नीदरलैंड से. It would be embarrassment, yeah. And I just hope कि Bangladesh have something to give to their fans. But Netherlands, the good team. Anyways, इसकी बात हम कल करेंगे. India. So that's it from this video. And चलिए काम करते हैं, कल के मैच का प्रीव्यू भी अभी कर लेते हैं. इंडिया और इंग्लैंड का मैच है सुपर संडे. इंडिया टेकिंग ऑन इंग्लैंड इन लखनऊ. It will be a day night game. And इंग्लैंड आई नहीं है वो अभी तक इंडिया. फिजिकली वो इंडिया में है, मेंटली वो अभी तक इंडिया में आई नहीं है यार. And they are looking shattered currently. And India on the other, they are doing their best. And only thing which I am concerned about India is Hardik Pandya. He won't be available for the next 2 to 3 games. And India won't risk him in the semi-final if he doesn't play before prior to it at least one game. And we want that, that your premier all-rounder should play at least one game before the semi-finals. But that's how the things are. And I feel that tomorrow's game will also be a cracker, and England will come. Finally, England will do their best. I remember in 2019 World Cup, England were looking out and out, all but out, but they managed to won against India, and they revived their campaign. But I guess it will be too late today now, because England now need to win 5 matches on the bounce, and 4 matches on the bounce, which is not looking possible. Because I still feel that Pakistan will win at least 2 games from here, and England they won't make it to the playoffs semi-finals this time, and it's not coming home obviously. And India कल का मैच टफ है यार इंडिया के लिए. I believe कि कल का मैच टफ है, barring only thing which is in India's court is कि कल लखनऊ में मैच है. स्पिन बहुत होती है यार लखनऊ में, एंड इंडिया के पास कुलदीप यादव है, रविंद्र जडेजा है. सो आई डू फील कि इंडिया, आई वुड स्टिल प्रेफर कि कल इंडिया ही मैच जीतेगा. एंड वी ऑल वांट कि इंडिया जीते एंड विनिंग 6 लगाए. चेन्नई, दिल्ली, मुंबई में भी जाना है. चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद एंड मैं भूल गया, हाँ, पुणे. एंड eventually India will win. So that's it from the video. And बांग्लादेश हॉलैंड का मैच की बात हम कल इंडिया के मैच के साथ ही करेंगे, क्योंकि इट्स अ डेड रबर है, ज़्यादा कुछ है नहीं. अगर नीदरलैंड जीत भी जाएगी तो भी वो प्लेऑफ सेमीफाइनल्स तो जाएंगे नहीं. सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कीप सपोर्टिंग, एंड होपफुली आई विल अपलोड डेली. एंड थैंक यू.